अच्छा, 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स थे कि you had an SNS overlap, end-to-end P and P overlap. अच्छा, and every time it has to be an orbital that full orbital does not form or is not involved in bonding. Dative bonding में it's involved, but not in normal covalent bonds. तो यहाँ पे you've got a P and P overlap, you've got an S and P overlap. तो ये सब हमने किया था और बाय बॉन्ड्स डिस्कस किए थे कि पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है. But if a molecule is making a double bond, so that means the other bond will be a pi bond because all the rest of the orbitals will be parallel to each other and they would overlap above and below the axis. So ये एक example था triple bond का, ठीक है. So we'll just do past papers related to this and आगे यही वाला था. अच्छा, so past papers related to sigma and pi bond, and hopefully we'll cover hybridization as well. अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ पे क्या pi bond and sigma bonds. अच्छा, sigma, pi bonds and hybridization. अच्छा, so the question is which elements can form pi bonds? ठीक है, so this question, okay, who can form pi bonds? So the answer to this is, actually the answer to this is that pi bonds are formed when you have at least have a double bond. Or a triple bond. Because a single bond is always a sigma bond. So can carbon form pi bonds? Carbon can form pi bonds because there's a number of molecules where carbon is making double bonds and triple bonds. ठीक है, जैसा HCN है, carbon dioxide है, they all have double bonds, right? So it can form pi bonds. Oxygen can form pi bonds. Why? Because it can form double bonds as well. Nitrogen can also form pi bonds because it can form a triple bond. ठीक है, ये clear है? जी. अच्छा, फिर ये मॉलिक्यूल है, वो कह रहा है कि a total, what is the total number of structural isomers including compound 2 that could be formed by adding a second? अच्छा, फिर number of pi electrons in each compound. Pi is when you have a double bond. So you got one pi bond over here and there's a double bond over here, that's another pi bond, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे भी you have one pi bond over here and you've got one pi bond over here. So that means a total of how many pi electrons? That's the number of pi electrons in each compound. So यहाँ पे it's a total of 4 electrons. 2 electrons being shared, 2 electrons being shared. So that's a total of 4 pi electrons. So 4 electrons in each compound involved in pi bonding. ठीक है, ये clear है? वो structure पे ना जाना, क्योंकि वो structure those are known as skeletal formulas. We'll discuss those structures later, ठीक है? But when you see a double bond, that's a pi bond. I mean, the first one is a sigma bond. The next one is a pi bond. फिर N2 का molecule है, वो कह रहा है N2 के अंदर ना there are 3 pi bonds. That's wrong because when you have a triple bond, the first one is going to be a sigma bond, और जो बाकी दो है ना, they're going to be pi bonds. ठीक है, so it's not going to, ये अपने we did draw this. Okay, this was an N2 molecule actually. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, but I'll write it down. Okay, this was actually an N2 molecule where you had a nitrogen atom, and that nitrogen atom had the other orbitals were all full. हाँ, उसमें ना ये 2px 7 electrons, so 2py and 2pz. So 3 of the orbitals, they needed an electron each. So nitrogen के जो orbitals, there were 3 orbitals, p orbitals, px, py, and pz. They all needed electrons, so they started overlapping with each other. Blue wale end-to-end overlap, that's the first sigma bond. Green wale, they would overlap above and below, that's pi bond, and the red ones वो पीछे से जाके और आगे से आके, so they would form a pi bond as well. So first one was a sigma, and the rest
were pi bonds. There were actually 2 pi bonds. Okay, is this clear? जी सर. अच्छा, फिर ये कि C shaped pair of electrons. That's obviously true. You got C shaped pair of electrons and 2 lone pairs of electrons. That is also true because नाइट्रोजन जो होता है ना उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है that's 5 electrons. एक सेकंड. अच्छा, so nitrogen has 5 electrons, so 3 of them are bonding, so they're two left, so they are 2 lone pairs. अच्छा, here's another question. How many sigma bonds are present in the molecule? Sigma bond, remember the first bond between atoms is always a sigma bond. अब इसके अंदर I'm going to draw the hydrogens ताकि वो bonds नजर आ जाए, so we can count them. ठीक है, there's an H. अच्छा, this one has 2 H's. अच्छा, so this one will have 2 H's as well. This one will have 1 H, 1 H, or will get 2 H's. अच्छा, अब ये कि first bond is the sigma bond. The first bond between atoms is always a sigma. So when you start counting them, it's going to be it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So you got 15, 16, 17, and 18. So in total, you got 18 pi bonds, not sigma bonds. Achha, where are the pi bonds? The double bond is a pi bond. So in the double bond, there's an extra pi bond. So there's one over here, and there is one over here. So there's 18 sigma bonds. Plus there are 3 pi bonds in this molecule. Okay? So remember this ke double bond mein koi bhi bond banega, the first one is going to be sigma. So if it's a single bond, it's sigma. If it's a double bond, the first one is sigma. Uske baad the rest are all pi bonds. Achha, we haven't done hybridization. Hybridization ka question hai. Achha, we did shapes. Achha, over here he's saying ke how many sigma bonds are bonds present? So this is ammonia, single bonds. They're all sigma bonds. Single bonds, they're all sigma bonds. So ammonia and ammonium molecules, there will be no pi bond. Because pi bond ke liye you need a double bond. So the answer to this is going to be they both have sigma bonds only. So what is involved in a carbon-carbon pi bond? So a carbon-carbon pi bond, it's a shared pair of electrons, obviously. There's a sideways overlap of p orbital. And will there be delocalized electrons? No, there won't be any delocalized electrons. Carbon, this is how a pi bond would always form. When carbon forms an ethene molecule, so what will happen is the fourth electron, which is going to be, they would form, their orbitals will overlap in a sideways manner, and that would result in the formation of a pi bond. That's what ethene would look like. Or you may explain me yesterday the questions would be very simple. They'll just ask you to draw. I mean, an example question could be. So an example question would be that example इस तरह का होगा कि एक सेकेंड. अच्छा, example इस तरह का होगा कि they'll ask you for HCN. Okay, they'll ask you एक सेकेंड. Anyways, they'll ask you for HCN and they'll say, okay, show us a pi bond. All you have to do is double bond and just show them H and there is C. The first one is going to be a sigma. If they're asking you to show them a pi bond, so just draw a pi bond. There's going to be a sideways overlap of orbitals.
So the orbitals will overlap, and that's it. That's your pi bond. There's actually going to be two pi bonds over here. So I mean, obviously they're not going to ask you for the 3-dimensional drawing. तो बस एक का होगा उन्हें ज्यादा. So that's it. हर दफा ना whenever you are asked to show a pi bond, that's it. That's all you have to do. अच्छा फिर diagram describes the formation of a pi bond. So which one looks like a pi bond? इनमें से कौन सा pi bond है? Or resembles a pi bond? क्या होगा राफे? फिर एक सेकंड. अब्दुल्ला कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी होगा. E? E for ball. हाँ ठीक है. B होगा क्योंकि it's वो से मिलता जुलता है. ठीक है. That's sideways. It's two p orbitals and they're overlapping sideways. ठीक है. So the electron density is above. This one is a sigma bond. ठीक है. This is this one. ये हमने sigma bond किया भी था कि it's a p and p overlap. The first one is a p and p overlap. Then he has also shown an s and p overlap. That's also a sigma bond. एक सेकंड है. अच्छा वापस इसमें आ जाते हैं. अच्छा ऑप्शन बी. Which statement about covalent bonds are correct? A triple bond consists of one pi bond and two sigma bonds. That's wrong क्योंकि a triple bond फिर वो पिछले सवाल में जाएंगे सेकंड के लिए. हाँ. सर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिग्मा बॉन्ड हो गए, बी पाई हो गए, सी हाइब्रिडाइजेशन हो गए. ये पाई है, ये तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये एस एंड पी ओवरलैप है ना. जी सर हाइब्रिडाइजेशन हो गया. तो सर वो डी क्यों नहीं? डी कुछ भी नहीं है. डी बस रैंडम किसी ने ड्राइंग की हुई है. ओके सर. या तो end-to-end overlap होगा. There's going to be an s orbital overlapping with a p, and there's an end-to-end overlap. Electron density is right in the middle. That's a sigma bond. या sideways overlap होगा कि there's a p orbital, and they overlap above and below. ठीक है. ये कुछ भी नहीं है. ओके सर. ठीक है. So this one is वैसे ही गलत है. अच्छा which statement और covalent bonds are correct? पहला वाला अगर x और y होगा तो बीच में the first one is going to be a sigma. And then there are going to be two pi bonds. So ये गलत है. It's not going to be one pi bond. That's wrong. अच्छा, the electron density in the sigma bond is highest along the axis between the two bonded atoms. That is true. के sigma bond में ये sigma bond है जिसना electron density जो है ना वो maximum, it's right in the middle. So that's true. A pi bond restricts rotation about the sigma bond. That is also true. ये मैंने explain किया था कि जब भी कोई चीज होती है ना वो ऊपर और नीचे ओवरलैप कर लेती है. यू कांट जैसा ये इथीन का मॉलिक्यूल है, यू कांट ट्विस्ट इट अराउंड नाउ कि पहले दिस कार्बन ओवर हियर. ठीक है. थिंक ऑफ दिस एज ये पंखे की तरह ना. लेट्स से ये एच के दो ब्लेड्स हैं. ठीक है. Previously these H's could rotate around, but now they can't. I mean this carbon cannot rotate because it's locked in place. जब ऊपर और नीचे से ओवरलैपिंग हो जाती है ना, if you try to rotate this side, that side would also rotate along with it. The pi bond will restrict rotation. If there had been no pi bond, some molecules hote hain, they don't have pi bonds like ethane, right? So uske andar carbon is tetrahedral. So if you look at ethane, so in ethane the rotation is not restricted, meaning ke what that means is okay, if I were to rotate this side,
I mean, the other side will not rotate along with it. I mean, you can rotate this side independently. जिस तरह वो fan घूम रहा होता है ना, ठीक है, like the fan is rotating round and round. So sigma bond में the rotation is not restricted. Like the attraction would still be there because there'll be electrons over here. Sigma bond with the electrons being shared. So even if this thing rotates around, the negative charge over here will attract the nucleus and the attraction would still remain there. यहाँ पे क्या होगा when the overlapping is above and below, if you rotate one side, you would either have to break the pi bond या फिर ये वाली side भी उसके साथ ही rotate करेगी. Is this point clear that pi bond restricts rotation and sigma bond it does not? Is that clear? जी सर. अच्छा, so हमारा जो क्वेश्चन था ना वो था कि which diagram जैसे ये वाला the pi bond restricts rotation, that is true. तो ये दोनों करेक्ट है. अच्छा, next one is which diagram represents the overlap of ये PA. ठीक है, that's what a pi bond looks like. अच्छा, here's another molecule. How many sigma bonds are present? So वो again count कर लो सारे. Every bond is a sigma bond. A double bond is one sigma bond. तो ये H में जल्दी से so that's एक H है. This one has two H's. So this one has two H's. अच्छा, कितने total sigma bonds? 1, 2, double bond 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और वही 18 है. मेरे ख्याल से क्वेश्चन डिफरेंट है, but it's 18. अच्छा, ये वाला मॉलिक्यूल, how many sigma bonds and pi bonds do you have? तो पहले तो जो नजर आ रहे हैं वो काउंट करो. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So that's 13 sigma bonds, the ones that you can see. The ones that you cannot see, वो hydrogen वाले bonds जो है, they're all sigma bonds because they are single bonds. So 3 over here, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12. तो 25 हो गए. ठीक है, that's 25. And then obviously 3 pi bonds. मतलब ये pi bond है, ये pi bond है, and there's a pi bond over here. So that's 3 pi bonds. Is that clear? जी सर. Yes. अच्छा, वो कह रहे addition polymerization में क्या होता है? मैं पहले explain करता हूँ. This is addition polymerization. You've got an alkene, and the alkene joins with other alkenes. अच्छा, तो दो alkenes बना लेता हूँ. Like thousands of alkenes they join up. ठीक है. So the double bond in the middle, it breaks and it breaks and they join up. So linkages are created. अब मुझे बताओ what has happened? What type of bond has broken, pi or sigma, when this happened? सर ये पाई होगा. ठीक है, वो डबल बॉन्ड टूटा ना, so वो जो ऊपर वाला बॉन्ड था ना, overlapping above and below, the pi bond broke. के पीछे sigma bond रह गया. There's only a single bond. So the pi bond only breaks. And what type of bond is formed? Sigma. क्योंकि वो बीच में bond बना है, तो that's a single bond, right? A single bond is a sigma bond. So it's going to be A. You broke a double bond so that it turned into a sigma bond only. So the pi bond was gone. और जो bond बना है, that's a single bond. Single bonds are all sigma bonds. अच्छा, which element can form pi bonds with other atoms? कौन सा क्या आंसर होगा इनमें से? Which one can form pi bonds? सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ठीक है, फ्लोरीन जो है वो नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है पाई बॉन्ड के लिए. एक सेकेंड. अच्छा, क्या उसके लिए ना डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है. So oxygen and nitrogen will
fluorine over here cannot make a double bond. अच्छा, नेक्स्ट वन इज चलो खत्म हो गया। कुछ उसके थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, वो भी कर लेते हैं कि थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग इन सब टॉपिक वाइज। फिर ये वाला भेजा आपने? कौन सा? फिर ये थ्योरी के लिए भेजा वो वैसे भेजिए, वो ग्रुप पे भेजी हुई है, मैं फिर कर देता हूँ। चलिए सर, फिर मैं देखता हूँ बाद में। अच्छा, ये वाला। तो आप एक टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, नहीं नहीं, अच्छा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स मिल गए। ओके सर, पेज 15। अच्छा, कौन सा पेज है? इट्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, किसका क्या है उसने एक्सप्लेन्स। अच्छा, जो डेटिव बॉन्ड है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किधर गया? पेज 15 है। अच्छा, दिस वन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है सेइंग के ड्रॉ सिग्मा बॉन्ड and draw a pi bond. So pi bond over here will be, in this case, will be just draw HCN, और इनके बीच में ना there's an overlapping that's happening above and अच्छा that's happening above and below. सर ये सारा कुछ ड्रॉ करते वक्त सर, ये जो ऊपर और नीचे हम ये बनाएंगे पी ऑर्बिटल्स, सर वो दोनों का सेम शेप होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं? शेप सेम के साथ, सर यानी उनका साइज। हाँ मतलब एक ही जैसे होंगे ना। और सर ये शेडिंग करना अलाउड है? हाँ कर लो, उसमें कोई मसला नहीं है, मतलब शेड कर लो ओके सर। पूरा। वो तो मैंने ऊपर वो बीच में लाइनें बनी हुई ना, वरना तो आप खाली ये भी शो कर सकते थे कि यू कुड हैव शोन जस्ट दिस थिंग कि एन, और ऊपर एक बना देते और एक इधर बना देते, जैसा मैंने शो किया था पहले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द एक्सिस, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर उसे कहा है कि एक वो बनाओ सिग्मा बॉन्ड, स्केच द शेप ऑफ वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन का शो कर लेते हैं कि कार्बन के केस में यहाँ पर तो चलो ट्रिपल बॉन्ड हो गया इन, और इस साइड पे व्हाट विल हैपन इज के वन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, अच्छा दैट विल ओवरलैप विद अ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का वो एस ऑर्बिटल होगा, सो दे विल ओवरलैप इन द मिडल। तो आप ये शो कर दो कि इट्स गोइंग, अच्छा सो आप ये शो कर दो कि इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। मतलब ये वाली साइड तो चलो शो नहीं कर रहे। There's going to be a hydrogen nucleus and the electron density is somewhere in the middle, ठीक है। Is this clear? और सर ये इसमें ना एक, सर ये नीचे डायग्राम बनाया हाँ है। क्या चीज? सर मैं कह रहा हूँ कि सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो नीचे जो डायग्राम बनाया है उसके अंदर एक सर्कल से बनाना जरूरी है, कौन सा सर्कल ये यानी जो? वो थोड़ा सा एक कर्व से बनाना हाइड्रोजन के लिए। हाँ मतलब ये तो वैसी यानी ये तो वैसी मैं शो कर ऐसे रहा कर। है। हाँ बेसिक तो बनाना ये है, ओके सर। बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, इसकी मार्केट स्कीम में उसने कार्बन का न्यूक्लियस भी कहा था कि ड्रॉ करो ना, तो इंस्टेड ऑफ उसने एक्चुअली एन वाला पार्ट उसे, क्यों, बिकॉज ही वाज आस्किंग फॉर द सिग्मा बॉन्ड ओनली, ठीक है। तो वो एन वाला पार्ट जी भी ना सर। उसने इग्नोर ही कर दिया था। उससे कहा था कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो साइड पे चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, सो दिस इज योर कार्बन एंड दैट्स योर हाइड्रोजन ओवर देयर। उसका स्फेरिकल ऑर्बिटल है। कार्बन के पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है। जी तो वो एस एन पी ओवरलैप हो रहा है। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा फिर तो ये आपने शो करना है, ये वो रफ है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कि
सिग्मा पाई बॉन्ड्स सेम चीज वो कह रहे हैं कि HCl और H में क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी स्फेरिकल, वो हमने ड्रॉ किए उधर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिडिल में होगी, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया हुआ था कि एच का कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वो 3 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड्स थे, एच एन एच ओवरलैप दैट लुक्स लाइक दिस। जो HCl या HF होगा ना, इट्स गोइंग टू बी, अच्छा इट्स गोइंग टू बी दिस वन, एक सेकंड में मैं, अच्छा जो HCl का होगा, it's going to be like this. There's going to be a p orbital from Cl and there's going to be an H spherical that will be, उनके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर जाएंगे, it's going to look like this. तो यहाँ पे HCl वो कह रहा है, तो HCl will be an SNP overlap. इसको थोड़ा, अच्छा it's going to be an SNP overlap. That's the nucleus और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मिडिल में होगी. Is this clear? जी सर. अच्छा bond polarity, it's one day we've already studied this. We've got polar bonds. Why do we have polar bonds? Because it's the unequal distribution of electrons in a bond. वो हमने intermolecular forces में पढ़ा था कि अच्छा unequal distribution of electrons in a bond which results in a slight positive and slight negative charges on the atom. Achha, charges on atom. Explain why HCl molecule is polar. So why? Because Cl is very electronegative. Achha, electronegative compared to H. So compared to H, so shared electrons are closer to Cl. Resulting in what? It's resulting in polarity. In the formation of a dipole. ज़्यादा डिटेल में जाना है तो बता दो कि भाई वो शो कर दो कि HCl, Cl is slight negative, H is slight positive. अच्छा, anyways, over here he's asking कि भाई वो draw करो. On the diagram, sketch the pi bond that is also present in ethene. So you are a double bond. तो pi bond में हमेशा वो जब कहेगा ना sketch करो तो बस ये कर दो sketch. Overlapping above and below. सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना. एक सेकंड सर, ऐसे कर दे थोड़ा सा. एक सेकंड. नहीं ये वाला तुम ये कह रहे हो ना, ये चीज ऐसे वाला सर, मुझे ओवरलैप हो जाता है. नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं. मैं एक्सप्लेन किया था कि एंड साइडवेज होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है. मैंने कहा था कि यू कैन पाई बॉन्ड शो करना ना, यू आइदर शो दिस कि इलेक्ट्रॉन इन above and below this, ये ग्रीन वाला ना, ओके सर, ठीक. कि यू कैन इसको शेड कर दो ग्रीन वाले को, ठीक है. तो मिनिमम जो है ना कि अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बस ये शो कर दो, इलेक्ट्रॉन इन above and below, राइट. अच्छा, बाकी क्वेश्चन इसी तरह होंगे कि तो ठीक है, ये भी हो गया. अच्छा, इसमें लाइट चली जाती है, यहाँ पे AC ऑफ हो जाता है, लैपटॉप हीट अप हो रहा है. नाउ 1 second. अच्छा हो गया. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट विल डू इज, बस आखिरी चीज है ये 2-3 वो, एंड द टॉपिक विल बी डन विद दिस टॉपिक.
क्वेश्चंस भी हमने काफी कर लिए इसके. अच्छा, so last thing is it's hybridization. Okay, what is hybridization? Actually, remember, you don't get complicated questions on this. It's just going to be very simple. Okay, count sigma bonds, pi bonds, और बस एक आध sketch कर दो. Okay, what is a pi bond? What is a sigma bond? Now, अच्छा, now this one. ये जो अगला part है. अच्छा, जो अगला part है वो ये कि hybridization, and specifically this hybridization is for, it applies to oxygen, nitrogen and fluorine, but हम अभी पहले कार्बन की कर लेते हैं. नहीं बल्कि वो अच्छा, ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. तो ये कल थोड़ा सा और ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करेंगे. ये मेरा लैपटॉप बहुत हीट अप हो चुका है विदाउट एन एयर कंडीशनर. ठीक है. ओके सर. सर ये फिर ये रिकॉर्डिंग में. हाँ, ये मैं भेज देता हूँ. वो मैंने भेजी है, वो पुरानी वाली तो भेजी है. बस हाइब्रिडाइजेशन रह गया, वो फिर कल हम खत्म ही कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. उसमें और कुछ नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, व्हाट हैपेंस इज, वैसे दे देता हूँ क्योंकि आई कांट राइट. अच्छा, ऑल दीज ऑर्बिटल्स एस, पी और डी, बल्कि जैसे यहाँ पे है ना, you had an S and S overlap, right? You had an S and P overlap, you had a P and P overlap. ठीक है. तो hybridization is simply कि जब orbital when it's bonding to another atom, तो उसकी जो शक्ल है ना वो बिगड़ जाती है. Its shape changes. जैसा this P orbital, when it was bonding with the S orbital, उसका जो electron है ना, it was getting attracted by hydrogen. So the electron density shifted to the left. मतलब वो stretch होता हुआ ना P orbital, it went in one direction. Same over here, the p orbitals, they were all attracting each other's electrons, and the electron density became maximum in the middle. So the point is कि जब कोई atom जो है ना, when it is bonding, the shape of its orbitals, the ones that are bonding, that would change. And when the shape changes, you are then not going to call them by their old names. Old names क्या थे? S orbital, P orbital, D orbital, right? So you're going to start calling them with their new names. जो उसकी नई शक्ल होगी ना, उसके हिसाब से आप उसको नाम दोगे. So is this idea clear that during bonding the S and P will change shape, which is why you're going to start calling it a different name? Idea clear है कि तो ये hybridization है. So the literal definition of hybridization is that it's the mixing of orbitals to form new hybrid orbitals. Orbitals तो वही होते हैं. It's just that the electron is getting attracted by one atom, and the p orbital or whatever the orbital is, whether it's an s orbital, it just stretches in one direction and it gets a new shape. When it gets a new shape, क्योंकि नाम जो है shape specific है, so you start calling it with a different name. So that is what hybridization is. चलिए ठीक है, ये करते हैं कंटिन्यू, कल करते हैं कंटिन्यू. ठीक है. ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके, टेक केयर. हाफिज.